हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मेरे पास बहुत से सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे थे, सो आई थॉट दैट आई विल मेक दिस वीडियो। द क्वेश्चन वाज कि क्या मेंस्ट्रुएशंस पीरियड्स के अंदर हम पूजा पाठ जप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत लॉजिकल और साइंटिफिकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो में चाहे आप बहुत ट्रेडिशनल ज्योतिष को मानते हैं या आप मॉडर्न हैं या आप अपने पेरेंट्स की भी बात, एक प्रथा चली आ रही कि बेटा नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू इट, किसी भी चीज को मानते हैं, आप हर तरह से कन्विंस हो जाएंगे। I will not explain what are menstruation cycles and what is all this. So you know all that, okay? I'll come to the point. You see, this human body is combination of three things. Remember this. वो तीन चीजें हैं. The first is that you can see is obviously the body, and the second thing is the mind, the program which is working, and the third thing is the soul, which is our Atma. So when these three things combine, we make it, a human being, a living human being. इन तीनों में से कुछ भी एक मिसिंग हो जाए, you are dead. If soul is gone, you are dead. If mind is gone, you are dead. If body is gone, you're not there, right? So combination of three, and all these three things are working together. So if you have to define, अगर आपको एक human को define करना है, आप define करेंगे, it is a combination of mind, body and soul. Question: if a female is going through the menstruation cycle, उसको periods आए हुए हैं, are these cycles related to mind or body or soul? The answer is it is related to body. शरीर के साथ इसका संबंध है, and because of discomfort इसका mind के साथ संबंध है. It has no relationship with the soul. Okay, सिर्फ इतना आप समझिए. So these 3 or 4 days has relationship with body and little bit of mind. It is not with the soul. अब हम इस चीज को अप्लाई करेंगे हमारे रिचुअल्स के ऊपर. मेरे गुरुजी कहते हैं, नवनीत, पूजा पाठ जप तप मेडिटेशन, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एंड यू विल रिलेट टू इट. आप रिलेट करेंगे इस चीज को. जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एक विधि के साथ आप कोई काम करते हैं, उसके लिए पहली चीज जिसकी जरूरत होती है वो होता है शरीर. आपको हवन करना है, आपको कहीं माथा टेकने जाना है, आपको शरीर का साथ चाहिए. बिना शरीर के वो नहीं हो सकता है. सो नाउ लिसन लिसन वेरी केयरफुली. अगर आप कोई पूजा, कोई अनुष्ठान कहीं पे विजिट करते हैं, बॉडी इज इन्वॉल्व, सो यू आर गेटिंग दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल फ्रॉम और थ्रू द बॉडी. सो द फर्स्ट थिंग, किसी भी तरह का पूजा अनुष्ठान पाठ, कोई भी क्रिया आप मंदिर या कहीं पे भी स्पिरिचुअल प्लेस पे करना चाहते हैं,
that is happening through body. No, you should not do it. Simple. Meditation is going to happen through mind. Meditation is for the mind, okay? Subconscious mind. Going in the subconscious mind is meditation. So if your mind is not stable that day, until and unless you have mastered your mind, it is going to be very difficult for you to meditate during those 3-4 days. So puja part ek taraf nikal gaya, and meditation has also taken aside. So what is one thing that we do for the soul? For the soul, we do one thing which is called japa. Jap karte hain jo aap. So the periods are not coming to the soul. Okay? It's coming to your body. So japa is one thing that you can do. And you can do it 24/7, 365 days. अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करते हैं, you can do it in your periods, no problem. Right now, people will ask me, "Oh, should I, touch? Because I'm gonna do it from my hands. Should I be doing it?" If you feel that you should not touch through your body, just keep it aside for 3 days and keep doing the Hare Krishna Mahamantra. Do it on your fingers. Don't do it on the fingers. If you don't want hair on the fingers, do it in the mind. Do it open. Because जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता है कि एक माला 7 मिनट लेगी, 8 मिनट लेगी, 6.5 मिनट लेगी. So you can calculate an average time and do it. Om Namah Shivaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Shivaya Namah. Namah Shivaya. Whole day. Just keep doing. Keep doing. Keep saying Om, Om, Ram, 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 Ram. Krishna, 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 Krishna. If you don't want to utter, do it inside. Japa is for the soul. Meditation is for your mind. And puja is to strengthen your lagna, your body. जब हम रुद्र अभिषेक करते हैं तो वो लॉन्जिविटी आप आत्मा की मांगते हैं. आत्मा की लॉन्जिविटी मांगने की क्या जरूरत है? आत्मा तो कभी भी नहीं मरती है. आप लॉन्जिविटी मांगते हैं शरीर की. You're asking for longevity of the body. So पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं, that is, हमें धन दे दो. Are you asking money, prosperity for the soul? No, you're asking it for the body, for the environment around you. That is what you're asking for. You are not asking it for the soul. When you meditate, you do yoga, the first thing that happens is your mind becomes extremely, extremely strong. So you should have no confusion कि आपको अपने menstruation cycle में क्या करना है और क्या नहीं करना है. Now you have the answer. And if you like this answer, if it is making some sense to you, it is logically, scientifically, technically, spiritually explained, please share this video as much you can. It will help tons and tons of people, millions and millions of people. They will not have this confusion in their life. Go ahead and do it. And Krishna will bless you because he's watching. He's looking at you and me and everyone. He's just watching. Right? बहुत बहुत प्यार. Hare Krishna.